Okay, welcome everyone. Today we are going to discuss our another concept in Python, and the name of the concept is known as control flow. So today I'm going to discuss control flow in Python. Let me rename the notebook control flow. Okay, so our today's concept is control flow. Control flow. Okay, before starting entire concept of control flow, let me discuss what is the meaning of a flow. Flow means execution. Flow means execution. Flow means execution. Flow means execution. And the meaning of control flow means execution or control execution. So the topic is control execution. If anyhow we'll be able to control the execution, if anyhow we will be able to control the execution, or we will be able to control the flow, that is known as control flow. That is known as control flow. Execution means whenever we run our code, whenever we run our code. Let's suppose I'm running this code by pressing this button, run button. So I'm running my code. If anyhow I will be able to control this execution with this flow, that is known as control flow. So in Python, we can control the flow with the help of two ways. First one is known as conditional statements. Conditional statements. First one is known as conditional statements. And the second one is known as loops. Second one is known as loops. In Python, we can control our flow with the help of these two methods. So let's discuss one by one. The first method is known as conditional statement. The first method is known as conditional statement. The first method is known as conditional statement. Now, inside conditional statements, as the name itself is self-explanatory, those statements which are governed by some conditions, those statements which are governed by some conditions, और जिनको कोई conditions control करती हैं, उन्हें conditional statements कहते हैं. We can control the statements with the help of three keywords. First is if, second is elif, and third one is else. Third one is else. Third one is else. इन तीन keywords का use हम frequently करते हैं in order to write our conditional statements. किसी भी conditional statements को लिखने के लिए we will be using these three keywords. We will be using these three keywords if, elif, else. What would be the syntax of writing the code? What would be the syntax of writing the code? You are supposed to follow this syntax. We will be starting with if. We will be starting with if. हम if से start करेंगे, then we will be providing certain condition here. Then we will be providing certain condition here. Once the condition are fulfilled, once the conditions are fulfilled, then we will come inside the if block. तब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे colon create करके उसके अंदर हम एक ब्लॉकिंग को क्रिएट करेंगे. उस ब्लॉकिंग के अंदर आएंगे. ब्लॉकिंग के अंदर आके हम अपना लॉजिक लिखेंगे. हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे. हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे. इफ आवर स्टेटमेंट्स ऑन लॉजिक लिखने के बाद में इफ आवर इफ कंडीशन डज नॉट होल्ड ट्रू, अगर क्या होगा कि ये कंडीशन होल्ड ट्रू होल्ड नहीं हो रही, तो उस सिनेरियो में हम अंदर नहीं आ पाएंगे. इन दैट सिनेरियो वी विल बी चेकिंग एलिफ कंडीशन. We will be checking elif condition. We will be checking elif condition. Again, we will be writing logic or statements here. Statements हम यहाँ पर लिखेंगे. But if our if condition fails, if our elif condition fails, then by default our code will come inside else block. Whatever the logic or whatever the statements we have written inside the else block, the code will be printing those statements. This is known as conditional statements का syntax. इसको conditional statements का syntax कहते हैं, जिसमें हम if, elif, else keywords का use कर रहे होंगे. if और elif के पास condition होगी, else के पास कंडीशन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? बिकॉज बाय डिफॉल्ट अगर इफ और एलिफ की कंडीशन फेल होती है तो बाय डिफॉल्ट वो एल्स कंडीशन को फुलफिल करेगा.
इसके बाद में इन दो डॉट को कॉलन कहा जाता है। हम कॉलन करके ब्लॉकिंग क्रिएट करेंगे। ब्लॉकिंग का मतलब है कि इसके अंदर जो कुछ भी हमने लिखा है वो इफ स्टेटमेंट से एसोसिएटेड है। जो कुछ भी हमने लॉजिक और स्टेटमेंट्स में लिखा है वो एलिफ से जुड़ा हुआ है। जो कुछ भी हमने लॉजिक और स्टेटमेंट्स में लिखा है एल्स में लिखा है वो एल्स से जुड़ा हुआ है। सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वन मोर थिंग, आफ्टर क्रिएटिंग ब्लॉक, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिखाई दे रहा होगा। इस एक्स्ट्रा स्पेस को हम इंडेंटेशन कहते हैं। दिस एक्स्ट्रा स्पेस इज जनरली नोन बाय इंडेंटेशन। दिस एक्स्ट्रा स्पेस इज जनरली नोन बाय इंडेंटेशन। ओके, सो लेट्स राइट सम कोड। हम कुछ कोड लिखते हैं। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। आई सेड enter your age, and on the basis of age, the person is eligible for voting or not. So since input built-in function provides us since input function built-in function provides us string data type, so we are supposed to convert this into integer. So हमने टाइप कास्टिंग का यूज करके इसे इंटीजर में कन्वर्ट किया और मैंने इसे एज एक वेरिएबल में सेव किया। Let's suppose someone has said his or her age is 23 years old. So I will be writing here a logic in such a way that if इसके बाद में कंडीशन क्या रहेगी, एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। इफ अगर एज हमारी 18 के बराबर या इससे ज्यादा है देन क्रिएट अ ब्लॉक कम इनसाइड और प्रिंट करना। उस सिनेरियो में क्या प्रिंट करना, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, आप वोटिंग के लिए एलिजिबल। But what if someone is not having a age of greater than or equal to 18? In that scenario, the if statement or if block does not hold true. In that scenario, ऑटोमेटिकली जो हमारा स्टेटमेंट है, जो हमारा कंट्रोल है, वो एल्स के पास आएगा और उस समय हम कह सकते हैं इन दैट सिनेरियो प्रिंट यू आर इन कॉलेज, आप कॉलेज में हैं। सो लेट्स सपोज किसी की एज 25 ईयर्स है, तो अकॉर्डिंग टू हिम अगर उसकी एज 25 साल है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर उसने कहा कि उसकी एज 10 ईयर है तो यू आर इन कॉलेज। सो दिस इज द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हुआ क्या यहाँ पर, इफ से स्टार्ट हुआ, एज ऊपर से एक वेरिएबल के रूप में हमने यूज किया। इसने कंडीशन को चेक किया, क्या कंडीशन 18 के इक्वल है, इससे ज्यादा है। अगर है तो ब्लॉक क्रिएट किया गया कॉलन के थ्रू, अंदर आया गया और प्रिंट किए गया उसके लॉजिक को। ये प्रिंट इस इफ से जुड़ा हुआ है, ये वाला प्रिंट इस एल्स से जुड़ा हुआ है। ब्लॉक क्रिएट किया गया, अंदर आया, एक इंडेंटेशन के साथ में प्रिंट दिया। नाउ नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अभी हमने सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया, हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, वोटिंग इज योर राइट, वोटिंग इज योर राइट। और इसमें भी हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। यू आर इन कॉलेज एंड यू आर ग्रो अप फर्स्ट, ग्रो अप फर्स्ट। सो इस तरह से हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी प्रिंट करवा सकते हैं। थर्ड सिनेरियो में, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, दिस एक्स्ट्रा स्पेस इज नोन एज इंडेंटेशन। व्हाट इफ आई डोंट प्रोवाइड इंडेंटेशन हियर, देन आई विल बी गेटिंग इंडेंटेशन एरर। अगर मैंने इंडेंटेशन प्रोवाइड नहीं करा तो मुझे इंडेंटेशन एरर फेस करनी पड़ेगी, So we are supposed to provide indentation here in conditional statements. हमें indentation provide करना ही है। इसका मतलब यह है कि whatever the statements we have written inside this if block are completely associated with this if. Whatever the print statements we have written inside this else block, those are associated with this else part. That those are associated with this else part. This is the indentation. Now next scenario ये कहता है कि हम indentation by default तो एक टैब के बराबर होती है, but if we want to provide only single space indentation then that is also possible, or if we want to provide 3 times tab indentation then that is also possible. Anyhow,
बस थोड़ा स्पेस होना चाहिए, यही चीज इसका कॉन्सेप्ट है कि इंडेंटेशन का मतलब है वट एवर द स्टेटमेंट्स और लॉजिक वी आर राइटिंग दैट शुड बी सेपरेट फ्रॉम अदर स्टेटमेंट्स, वो सेपरेट होना चाहिए बाकी स्टेटमेंट से। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेंटेशन। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Let's suppose I have taken input from the user. I have taken input from the user. I said enter your marks, enter your marks, enter your marks in Python. In Python, मैंने किसी स्टूडेंट से कहा अपने मार्क्स एंटर करो। सिंस मार्क्स आर इंटीजर, सो वी आर सपोज टू कन्वर्ट दिस इन इंटीजर एज वेल, और मैंने उसे मार्क्स में सेव किया। लेट्स सपोज समवन हैज रिसीव्ड अ मार्क्स ऑफ 90, देन हम दोबारा से स्टेटमेंट लिख सकते हैं if marks are greater than, if marks are greater than or equal to 90, in that scenario the person or the student is going to receive a grade. I can say that grade A, आई कैन से दैट ग्रेड ए, उसे ग्रेड ए मिलेगी। नाउ अब अभी तक हमने डिस्कस किया था इफ और एल्स। अगर इफ हमारा फेल होता है, इफ अवर इफ स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू, बाय डिफॉल्ट इट विल बी प्रिंटिंग एल्स पार्ट। बट व्हाट इफ की जगह पर अगर हमें और भी कंडीशंस को चेक करना, इन दैट सिनेरियो एलिफ का कॉन्सेप्ट आता है। एलिफ के कॉन्सेप्ट में हम ये बोल सकते हैं, अगर हमारी इफ स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू, इन दैट सिनेरियो चेक एलिफ। एलिफ मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू, marks are greater than or equal to 80, in that scenario the student is going to get the grade B. The student is going to get grade B. If our if statement does not hold true, if our elif statement does not hold true, then again check marks are greater than or equal to 70। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 70 या इससे ज्यादा है, या फिर 70 और 79 की रेंज में है। in that scenario the student is going to get grade C, the student is going to get grade C। elif ऐसा भी हो सकता है कि मार्क्स जो है 60 से 69 के बीच में हो। इन दैट सिनेरियो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इन दैट सिनेरियो स्टूडेंट को जो ग्रेड मिलेगी वो मिलेगी डी, ग्रेड डी। और अगर 60 से नीचे वाला होगा देन आई विल बी सेइंग द स्टूडेंट इज फेल्ड, स्टूडेंट फेल हो चुका है। उस सिनेरियो में हम कहेंगे स्टूडेंट फेल हो चुका है। तो एल्स वाले पार्ट में हम बोलेंगे ग्रेड एफ, ग्रेड एफ, और इसके साथ ही एक चीज और बोलेंगे फेल्ड, फील्ड। नाउ लेट्स सपोज किसी के मार्क्स अगर हमारे पास 95 आए, उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को ग्रेड मिलेगी यहाँ पे ग्रेड ए। अगर किसी के 85 मार्क्स आए हैं तो वो इफ वाली कंडीशन को होल्ड ट्रू होल्ड नहीं कर रहा है, वो एलिफ के पास आएगा क्योंकि एलिफ की कंडीशन 80 से 89 है। इन दैट सिनेरियो उसे बी ग्रेड मिलेगी। if someone is getting 75 as a marks, then he will be receiving C as a grade. If someone is getting 65 marks, then he will be receiving D as a grade। और अगर किसी के 40 मार्क्स है तो उस केस में वो फेल हो जाएगा। So this is the concept of if elif else, this is the concept of control flow which we have discussed today। I hope you have understood all the concepts of control flow in which I have discussed the conditional statements, and in order to explain the conditional statements I have used three examples. First is voting example, second one is a marks examples, second one is marks example, and I have used if, elif, and else statements. Even I have discussed with you the indentation part and blocking part. Please go through the complete lecture again and again, and if you find any doubt, then do let me know in the comments. Thank you.